Good morning, students. So we were discussing biomolecule chapter at class 11 biology. So I will be resuming from where we have left. I am Hemlata Yadav, your teacher. So in the biomolecules, we were discussing about amino acids, and then we have seen about the peptide bond formation. The topic which was left in between was the flexibility of polypeptide backbone. The backbone of protein is linked sequence of rigid planar peptide bonds. बैकबोन प्रोटीन की रिजिड प्लेनर पेप्टाइड बॉन्ड्स की बनी हुई होती है. In contrast to peptide bonds, which is partial double bond character, bonds between NH2 group and a alpha carbon and between alpha carbon and COOH group are pure single bonds. So भले ही ये अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, बट उसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. द रोटेशन ऑफ द टू बॉन्ड एडजस्टिंग टू द पेप्टाइड बॉन्ड रिजल्ट इन द वेरियस ओरिएंटेशन. और जो रोटेशन होती है उनकी दोनों बॉन्ड्स के बीच में, वो बहुत सारे रोटेशंस शो करती है. Because of this freedom of rotation, about two bonds of each amino acid residue link, there many possible proteins can fold. और बहुत possible ways होते हैं इस orientation की वजह से. Because of this freedom of rotation, about two bonds of each amino acid residues linked, there are many possible proteins can fold. The rotation angle of these bonds can be specified by dihedral angle, torsional angle. इनकी रोटेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं हम डायहेड्रल एंगल बताकर इनके बीच का. द रोटेशन एंगल अबाउट सी अल्फा एन बॉन्ड इज कॉल्ड फाई एंड द एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन सी अल्फा सी इज नोन एज साई. सो रोटेशन एंगल अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन ग्रुप ऑफ अमीनो के सी अल्फा एन बीच में जो होता है, तो सी अल्फा एन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको फाई बोलते हैं. एंड द एंगल ऑफ रोटेशन जो सी अल्फा सी बॉन्ड के बीच में होता है उसको साई बोलते हैं. अ क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ईदर बॉन्ड एज व्यूड इन फ्रंट ऑफ द बैक ग्रुप करस्पॉन्ड्स टू अ पॉजिटिव वैल्यू. और जो क्लॉकवाइज रोटेशन होती है बॉन्ड की, चाहे हम उसे फ्रंट से देखें या तो बैक से देखें, तो एक पॉजिटिव वैल्यू उससे दिखती है. द फाई एंड द साई एंगल्स डिटरमाइन द पाथ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. जो फाई और साई एंगल्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन का पाथ दिखाते हैं. बाय कन्वेंशन बोथ फाई एंड द साई आर डिफाइंड एज 0 डिग्री इन द कन्फर्मेशन विच हैज टू पेप्टाइड बॉन्ड्स. जब हम कन्वेंशन से देखते हैं तो फाई और साई 0 डिग्री दिखते हैं हमें कन्फर्मेशन में, इन विच टू पेप्टाइड, जहां पर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स रेजोनेंस स्ट्रक्चर है पेप्टाइड बॉन्ड का ये, जिसमें भले ही ये बॉन्ड सी अल्फा एंड एन की this bond is a single bond, but it is a partial double bond character. It has a partial double bond character because of the resonance property of the peptide bond. And in the lower side we can see that the angles, what the C alpha and N, the angle between the C alpha and N is called the phi angle, and the C alpha and C is called the psi angle. You can see here. Amide planar. This is the amide plane where C alpha and N are connected. This is the carboxylic group. Trans and cis conformations. These both are the mirror images of each other. So you can see that this portion is seen just adjacent because these are mirror images. So if the mirror is between this
these two structures, then they are enantiomers of each other, optically active isomers. And here, and this is trans conformation and this is cis conformation. And you can see that here the bond is in this way. The peptide bond is in this way, and here the peptide bond is the carboxylic group and the amino NH group is on both the sides, same sides. So these are the two forms in which the amino acid can become because of the rotation. Connected to a single carbon in the same plane, the dihedral angle, the psi and the phi have any value between minus 180 degree to plus 180 degree. तो इनके बीच में डायहेड्रल एंगल जो होता है फाई और साई, उनकी वैल्यू -180 से +180 होती है. बस मोस्ट ऑफ द वैल्यू इज फाई एंड द साई आर प्रोहिबिटेड, और ज्यादातर वैल्यूज प्रोहिबिटेड होती है. कंफर्मेशन इन विच फाई एंड द साई आर बोथ 0 डिग्री इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इंटरफेरेंसेस. अगर जहां पर दोनों एंगल्स 0 डिग्री हो वहां पर भी स्टेरिक इंटरफेरेंसेस से इंटरफेरेंस की वजह से प्रोहिबिट होता है, तो फाई और साई 0 नहीं हो सकता. रामचंद्रन प्लॉट. सो रामचंद्रन कंफर्मेशन फुल्ली स्ट्रेच पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें फाई और साई 180 डिग्री है, उसको डिटरमाइन करा गया था रामचंद्रन द्वारा. और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाज शोन ऑफ ईच अमाइनो एसिड रेसिड्यू, एंड इफ द वैल्यूज ऑफ साई एंड द फाई फॉर ईच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट, जहां पर वैल्यू सभी अमाइनो एसिड के लिए कितनी फाई होगी साई होगी वो दी गई थी रामचंद्रन प्लॉट में. रोटेशन अबाउट बॉन्ड्स इन दीज पेप्टाइड, psi is phi is the rotation angle between C alpha and N. So C alpha और N के बीच का रोटेशन एंगल phi कहलाता है, एंड C alpha एंड C के बीच का एंगल psi कहलाता है. यहाँ पर लिखा हुआ है. So phi is the angle between C alpha and N, and psi is the angle between C alpha and C. In 1963 में G.N. Ramchandran identified that the amino acid residue in polypeptide cannot just have any pair of values. अमाइनो एसिड का रेसिड्यू इसका सिर्फ पर्टिकुलर फाई और साई वैल्यू हो सकती हैं. ऐसे रैंडमली कोई भी वट एवर कम्स इट कैनॉट गो विद दीज find the psi values. The values of phi and the psi are permissible and can be predicted by assuming atoms as hard solid spheres. So ये जो values हैं ये permissible होती हैं, predict भी कर सकते हैं हम, assume कर सकते हैं atoms का hard और solid spheres की तरह. The allowed value of phi and the psi can be represented on a two-dimensional plot called Ramchandran plot. इनकी values हम एक two-dimensional plot पे plot कर सकते हैं, phi और psi की values. We are able to view Ramchandran plot in which there is a two-dimensional plot. That means x-axis is there, positive y-axis is here, and minus y-axis is downwards, and 180 degree it is having maximum value in -180 plus 180, and in here it is divided into 4 parts, in which this is the first quadrant, the first part, or we can say, then this is the second part, and third, and so on. So collagen helix angles have been found over here in this region, and right-handed alpha helix are found always in the -180 degree 0 degree region, and left-handed alpha helix are shown, which are rare in the last quadrant. So anti-parallel beta sheets are among the collagen helix also.
There are anti-parallel beta sheets which are at the top nearby positive 180 degree, and the anti-parallel beta sheets are in the mid, and the parallel beta sheets are at the lower position. So collagen fiber सबसे ऊपर दिखाई देता है डिग्रीज में, anti-parallel beta sheets middle में, and parallel beta sheets at the last. Whereas this is about the Chi degrees. 0 to 180 degree is the Chi degree, and 0 to minus 180 degree is the values of right-handed alpha helix. Left-handed alpha helix is shown, which is rare in the last quadrant, and here are the pi degrees. Minus 180, 0. Same way here it is plotted, that midway it is 0 degree, and that's this side it is 180 degree minus, this side it is 180 degree plus. So we can see that in 180 degree minus portion only right-handed alpha helix come with the psi and the phi values. Uh, at this position, we can find the psi values and we can find the phi values like this. Whenever we will plot, we can find psi and the phi values like this by extrapolating the points on the y-axis and the x-axis to get the degrees. So इस वे में हमें in this way we are able to get the values of psi and the phi. One region contains psi and the phi value that produces parallel beta sheets. एक रीजन में हमें psi और phi values मिल रही हैं जिससे पैरेलल बीटा शीट मिलती है, और एक रीजन में हमें एंटी पैरेलल बीटा शीट और कोलेजन हेलिक फाइबर मिलता है. सेकेंड रीजन इंक्लूड psi and the phi values that produces the right handed helix. सेकेंड रीजन में हमें psi और phi values मिलती हैं जो राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं, और थर्ड रीजन में हमें left-handed helix मिलता है. Though left-handed helix come in the sterically allowed region, but this conformation is not found in proteins due to the less stability. ये conformation proteins पे नहीं मिलता less stability की वजह से. So C alpha C bond alpha helix का 10 alpha helix is a rod-like structure. A polypeptide with a planar peptide can form alpha helix structure with twisted about C alpha and bonds. So polypeptide chain planar peptide bond can form a helical structure. जो planar peptide bonds वाले polypeptide chain है वो twist होकर alpha helix structure बना देती है. C alpha N and the C alpha C bonds are called alpha helix. Thus alpha helix is a rod structure. The hydrogen bond between NH and the CO group of main chain stabilizes the helix. The CO group of each amino acids forms a hydrogen bond with the NH group of these amino acids that is situated 4 residues ahead in the sequence. All the main chain NH and CO groups are hydrogen bonded except the amino acid near the ends of the helix. So मेन चेन में जितने भी CO और NH ग्रुप होते हैं वो सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, सिर्फ एंड पॉइंट्स वाले CO और NH ग्रुप्स को छोड़कर. So main chain के NH and CO groups are hydrogen bonded except the amino acids near the end of the helix. So alpha helix connected loop से connected हो जाता है alpha helix. Alpha helix can be right-handed. Alpha helix right-handed होता है अगर वो clockwise है, and left-handed होता है अगर वो counter-clockwise है. Right-handed helices are sterically more stable. ऐसे अल्फा हेलिक्स ज्यादा होते हैं जो राइट हैंडेडली हेलिक्स होते हैं क्योंकि स्टेरिकली स्टेबल ज्यादा होते हैं. लेस क्लैश बिटवीन साइड चेन्स, उनकी साइड चेन्स में कम क्लैश होता है बैकबोन में. ऑल द नोन पॉलीपेप्टाइड कंटेन द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स. सभी नोन पॉलीपेप्टाइड का राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है. द अकरेंस ऑफ अल्फा हेलिकल कंटेंट इन द प्रोटीन रेंजेस वाइडली. और अल्फा हेलिकल कंटेंट प्रोटीन में वाइड रेंज का होता है. फॉर एग्जाम्पल फेरेटिन, अ ब्लड प्रोटीन दैट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ आयरन
एक ऐसा प्रोटीन है ब्लड का जो आयरन को स्टोर रखता है। 75% इसके अमीनो एसिड रेसिड्यूज अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। फेरेटिन के 70% अमीनो एसिड रेसिड्यूज अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। यहाँ पर अल्फा हेलिक्स का शेप दिखा रखा है। दिखने में ये इस तरह का पॉलीपेप्टाइड फोल्ड हुआ है एंड यू कैन सी के मेन चेन के NH और CO ग्रुप्स ने अपने आप की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई है, और यहाँ पर इसको इस तरह से हमें शो कर रखा है कि राइट हैंडेड फैशन में कॉइल हो रहा है। Now, alpha helix can be connected also here with the loops. Alpha helix are connected by loops. These alpha helix structure present in the myosin, tropomyosin of muscles and keratin of hairs. ये अल्फा हेलिक्स हमें स्ट्रक्चर्स एग्जांपल की फॉर्म में मायोसिन जो कि मसल का प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन मसल के कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में से आते हैं, केराटिन ऑफ हेयर एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्टिफ बंडल ऑफ फाइबर्स। इनके अंदर इन जो बंडल्स हैं उनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है काफी इन फाइबर्स में। द पीरियोडिक बीटा प्लेटेड सेकेंड टाइप का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जो पीरियोडिक स्ट्रक्चर दैट पॉलिंग ने दिया है, सेपरेटेड इन प्रोटीन सीक्वेंस अरेंज साइड बाय साइड। जब प्रोटीन सीक्वेंस साइड बाय साइड अरेंज होते हैं तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर मिलता है हमको। Based on two orientation of the stranded beta sheets are of two type, parallel and anti-parallel beta sheet. Beta sheet भी दो तरीके की होती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में रन करती हैं स्ट्रैंड्स, दे आर कॉल्ड पैरेलल बीटा शीट्स। इफ रन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर स्ट्रैंड के सी टर्मिनल और एन टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनको एंटी पैरेलल बीटा शीट कहेंगे। पैरेलल बीटा शीट लेस ट्विस्टेड होती है कंपेयर टू एंटी पैरेलल। तो पैरेलल इज लेस ट्विस्टेड and anti-parallel is more twisted. The branch amino acids such that valine and isoleucine possesses extended structure, therefore can fit more easily in beta sheets. So जो ब्रांच अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके जैसे वेलिन और आइसोल्यूसिन, इनके अंदर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से वो टाइटली कॉइल्ड अल्फा हेलिक्स में नहीं हो सकते, पर बीटा शीट में इजीली फिट हो सकते हैं क्योंकि वेलिन और आइसोल्यूसिन में एक्सटेंडेड थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो वो अल्फा हेलिक्स में ज्यादा टाइटली कॉइल नहीं होने की जगह बीटा प्लेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो एंटी पैरेलल और पैरेलल की आप एरोज से शो कर सकते हो। एंड इफ द एन टर्मिनल सी टर्मिनल face it opposite to each other, then it's anti-parallel, and if both are facing towards both C terminal and terminal toward one side and connected by the loop, then it is called a parallel beta sheet. एंड हेयर बीटा शीट का डायग्राम आपको दिख रहा है। एक अमीनो एसिड का चेन रेसिड्यू इधर है, एक अमीनो एसिड का चेन रेसिड्यू इधर है। दोनों के बीच में हाइड्रोजन प्लेन शीट लाइक मैनर में हो रहे हैं, और आप देख रहे हो जिगजैग जिगजैग शीट्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं। पेप्टाइड 1 पेप्टाइड 2 दोनों की चेन्स हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑल रेसिड्यू इन प्रोटीन इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर सारे रेसिड्यूज 3 डायमेंशन में कॉइल हो, सुपर कॉइल हो, तो उसको फोल्ड हो, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर इंक्लूड लार्ज रेंज एस्पेक्ट्स अमीनो एसिड्स, द अमीनो एसिड्स दैट आर फार अपार्ट इन पॉलीपेप्टाइड चेन विद इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में इंटरैक्ट। तो ये बनता कैसे है, जब अमीनो एसिड्स जो कि बहुत दूर दूर है, फार अपार्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन में, विद इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वो इंटरैक्ट करते हैं टू ईच अदर टू फॉर्म कंप्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर, और इंटरैक्ट करके वो कंप्लीटली फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन में। इन टर्शरी स्ट्रक्चर देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम एडिशनल बॉन्ड्स लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स। सो टर्शरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्वमेंट होता है एडिशनल बॉन्ड्स का, जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक और आयनिक बॉन्ड। तो ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में। The disulfide bonds are formed by the oxidation of a pair of cysteine residue. Disulfide bond ऑक्सीडेशन से बनता है cysteine residue के।
ये हमें याद होना चाहिए कि क्योंकि हमें पता है सिस्टीन में एसएच ग्रुप था, तो जब दो एसएच ग्रुप जुड़ते हैं तो डबल एस बॉन्ड बन जाता है, एस बॉन्ड एस। दीज बॉन्ड्स मेक प्रोटीन, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रोटीन को ग्लोबुलर बना देते हैं शेप में, एंड सम एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ग्लोबुलर इन शेप। तो इनमें से ये वाले जो प्रोटीन्स हमने बताए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो, पेप्टाइड हार्मोन हो, इम्यूनोग्लोबुलिन हो, so these are enzymes on, these are globular in shape, three dimensional tertiary structure ही होता है इनका. In the tertiary structure, polar R group of the amino acid residue are located on the outer side because of their hydrophobic nature. Polar groups जो होते हैं tertiary structure में outer side पे होते हैं because their nature is hydrophobic, and non-polar groups are amino acids. जो non-polar amino acids होते हैं वो interior में coil होते हैं because they are away from the hydrophobic interactions. So और वो अपने अंदर they are, because they are making hydrophobic interactions. So non-polar amino acids will be located on the outer side. Polar amino acids, polar R group amino acids will be located on the outer side, and non-polar R groups, because of the hydrophobic interactions, are in the inside. ये याद रखना हमको, located in the interior. So non-polar, because I have non-polar is located in the interior because they are making their hydrophobic interaction. Now, what are non-polar amino acids? Non-polar amino acids जिनमें side chains, in which side chains are hydrocarbon chains, so वो hydrophobic interaction बना सकेंगे. And out polar R groups, those amino acids which are having positive or negative bond are called polar amino acids because they have charge separation. So they are on the outer side because of the हाइड्रोफिलिक नेचर, वो ज्यादा इंट्रैक्शन वाटर से कर सकते हैं, तो वो बाहर की तरफ रहेंगे. द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है प्रोटीन्स का. Three-dimensional structure of more than 1000 protein have been revealed by the X-ray crystallography and nuclear magnetic resonance imaging. तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव टू टेक्निक्स, मोस्टली दो टेक्निक्स which are used are X-ray crystallography and nuclear magnetic resonance imaging, NMR techniques. So you have to remember that these techniques are used in the three-dimensional structure analysis. Hydrophobic interactions are shown here on the outer side and in the hydrophobic groups of the amino acids. So these are the hydrophobic interaction, the hydrocarbon interaction among themselves. And here a hydrogen bond is shown. Here the disulfide bridge is shown inside, and ionic bonds are shown inside interior because they are having the polar charge amino acid. So in the interior most region there will be the a folding is shown and hydrophobic interactions are shown, and when it has coiled up so much, so then we can see that three-dimensional form it has got. Quaternary structure, some protein may consist of more than one polypeptide subunits which may be identical or different in their primary structure. These structure subunits associate specifically to each. So here we can see that there are quaternary structure of hemoglobin. It's having two alpha chains and two beta chains. So दो अल्फा चेन्स और दो बीटा चेन्स यहाँ पर साथ में associated हैं, तो such the protein which is formed of the subunits is known as a quaternary protein. And other to form a comparatively large and complex molecule, quaternary structure. Quaternary structure is the spatial arrangement of the protein subunits. These subunits stabilized by hydrogen bond electrostatic interactions, ionic bond, disulfide bonds. Depending upon the subunits, quaternary structure may have dimers, trimers. Identical protein subunits from homodimers and homotrimers, whereas non-identical subunits from the heterodimers or heterotrimers. The quaternary structure of hemoglobin is given in the figure 3.28. So quaternary structure आपको यहाँ पर given था, ये quaternary structure था
hemoglobin का. Now coming to the nucleic acid, the last biomolecule which is left is nucleic acid. And nucleic acid, every cell organelle named nucleus, mitochondria, even chloroplasts have their own nucleic acids. Even the cell, we have an organelle called nucleus. So nucleus is the having a storehouse of genetic material. ये हमें पता है. And DNA is mostly the genetic material of many living organisms. न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के. सो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. और जो क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड हमें मिलता है न्यूक्लियस में, वो एसोसिएटेड होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स के. यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर जो हमें न्यूक्लिक एसिड मिल रहा है वो हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है. वो क्रोमेटिन नाम का स्ट्रक्चर बनाता है टू फॉर्म क्रोमेटिन विच इज अ डीएनए थ्रेड हैविंग द हिस्टोन्स. एंड न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर हैं वैसे न्यूक्लियोटाइड्स के, लिंक थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस. सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. वन न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू अनदर बाय द लिंकेज विच इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. Two types of nucleic acids are present in the cells, namely deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So दो तरह के nucleic acid cells के अंदर होता है. DNA which is main genetic material and ribonucleic acid is a messenger of the DNA. DNA acts as a genetic material and inherits the information from one generation to next generation. तो DNA genetic material की तरह काम करता है और एक generation से दूसरे generation में information पहुंचाता है. However, RNA serve as genetic material in some viruses. RNA कुछ genetic material की तरह virus में genetic material की तरह सर्व करता है. न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. आरएनए और डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो नाइट्रोजन की बनी हुई होती हैं, बेस, शुगर और फॉस्फेट. तो तीन चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में. अगर हम इसे सब यूनिट में बांटे तो नाइट्रोजनस बेस होता है एक, एंड शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो थ्री थिंग्स द वन nucleotide is formed. The sugar that is present in the nucleic acid is pentose sugar, which is of two types. जो sugar present होती है वो pentose sugar की दो तरह की होती है. The one present in the DNA is called 2-deoxyribose, D-ribose होती है वो. एंड ये डीएनए में प्रेजेंट होती है. द शुगर जो डीएनए में प्रेजेंट होती है वो 2-deoxy D-ribose होती है. एंड आरएनए में जो प्रेजेंट होती है वो सिर्फ डी राइबोज होती है. उसमें 2 डैश पे कोई डीऑक्सी पोजीशन नहीं होती. आरएनए में सिर्फ राइबोज शुगर होती है. RNA only has ribose sugar, does not have any deoxy group at 2 dash position. It have both the oxy group, O hydroxyl groups. Both the pentoses are present as close as 5-membered ring. Pentoses दोनों 5-membered ring. नीचे हमें दिखा रखा होगा 5-membered ring. We have given a diagram of the 5-membered ring. For numbering pentoses of nucleotides, the carbon number are given prime position designated to differentiate them from the numbered atom of the nitrogen bases. So to differentiate them from the nitrogen base number, we give prime positions to the sugars carbon. So here we can write 1 prime position, 2 prime position, 3 prime position, 4 and 5 and so on. So there 5 carbon sugar is shown here like a pentose ring. So 5 pentagon ring type में हमें ये sugar बनानी है. And it is having the substituents attached to all the 1 prime, 2 prime and 3 prime position. So the first one is the D-ribose, and the second we can see is the 2-deoxyribose, which is found in the DNA. It's having a deoxy group, means oxy group is absent from here, which was present in the D-ribose. So it becomes 2-deoxyribose sugar, which is found in the DNA. Now coming to the next topic, nitrogen bases are of two types. Nitrogen bases दो तरह के होते हैं, purines and pyrimidines. Two purines bases of the DNA and RNA are adenine, guanine. Two purine bases के नाम ये हैं, guanine और adenine. And among the pyrimidines, cytosine are present, and both DNA and RNA. Thymine is present in DNA only, and uracil is present in the RNA only. So thymine and cytosine is present in the DNA only. Adenine and guanine is present in the in both DNA and RNA. And the structure of 5 major bases is shown.
3.30 स्ट्रक्चर 5 मेजर बेसिस का 3.30 फिगर में शो हो रहा है. द प्यूरिन एंड द pyrimidine bases containing aromatic ring structures which absorb light at the wavelength to 60 नैनोमीटर. प्यूरिन और pyrimidine के बेसिस की जो एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट नियरली 260 नैनोमीटर्स पे, क्योंकि प्यूरिन और pyrimidine के एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये दे एब्जॉर्ब द लाइट एट द 280 नैनोमीटर वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रोमीटर. प्यूरिन का स्ट्रक्चर हमें दिखा रखा है डबल रिंग मेंबर्ड, pyrimidine का स्ट्रक्चर सिंगल रिंग मेंबर्ड रिंग दिखा रखा है. और यूरेसिल एक ऐसा pyrimidine है जो कि आरएनए में मिलता है ओनली, फाउंड इन ओनली आरएनए नॉट इन डीएनए. इंस्टेड ऑफ यूरेसिल वी हैव थाइमिन इन द डीएनए. A base is either purine or pyrimidine, a pentose sugar unit or a fast phosphate group are linked together to form nucleotide. So one base, one pentose sugar, and a phosphate group. All these three are linked together to form a nucleotide, which is a monomer unit of the DNA. On the other hand, a base linked only to pentose sugar, only if a base is linked to the sugar by the phosphate without a phosphate group, phosphate group नहीं हो और सिर्फ एक पेंटोज शुगर को हम बेस से जोड़ दे तो दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड. इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं जहाँ पर सिर्फ एक पेंटोस शुगर से बिना फॉस्फेट के सिर्फ पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन बेस ही जुड़ा होता है, तो इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. एंड 4 न्यूक्लियोसाइड है यहाँ पर, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन. सो वी हैव 4 न्यूक्लियोसाइड्स. पर जब न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, व्हेन न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड ऑल द 3 आर लिंक्ड. And the deoxyribonucleotides or deoxyribo 5' monophosphates which form structural unit of DNA. तो ये unit है DNA के structural unit है. 4 types are there. The 4 types of nucleotides are deoxyadenylate, DAMP, deoxyguanylate 5' monophosphate GMP. So these are the the nucleotides which are found: deoxycytidylate, deoxythymidylate, thymidine 5' monophosphate. And nucleotides in DNA are indicated by the prefixes. और ये nucleotide को prefix से indicate करते हैं. D that contain deoxyribose, DATP, DCTP, DCMP हम लिख रहे हैं. तो D is here for deoxy sugar. Here deoxyadenosine is shown first. Now you can see deoxyadenosine is shown by the nitrogen base, and adenine is attached to the 1' position, and at the 5' phosphate is attached. So it is called a deoxyadenosine. It's a adenine containing nucleotide. And here also deoxyguanosine is shown. Guanine is added at the 1' position, and we are having a phosphate group at the again 5' position. This is a 5' per carbon. So 5' position always is joined by the phosphate group. 1' position of the 1' position is always joined by the nitrogen base. So we are this way we have studied the structures of the nucleotides. The deoxythymidylate is also shown, in which the thymine is attached to the 1' position, and the cytidine is attached in the 1' position in the deoxycytidine. Uridine uridylate, uridine 5 monophosphate is shown here. Nucleoside and nucleotides are present in the DNA, RNA. So uridine monophosphate, because it is present in the RNA. So here you can, 2 things are important to note. One is the 2' position is having the hydroxyl group, so it is a ribose sugar. And other thing is the uridine. This nitrogen base is the uridine.
So it become uridylate and uridine 5' monophosphate. It is present in the RNA. The four nucleosides of the RNA are called guanosine, cytidine, uridine, which when bound to phosphate group of ribonucleotides or ribonucleoside 5 monophosphate. There are four types of ribonucleotide, namely adenylate, adenosine 5' monophosphate AMP, and guanosine 5' monophosphate, cytidylate, cytidine 5' monophosphate, and uridylate, uridine 5' monophosphate. Polynucleotide chain nucleotide of both DNA and RNA covalently linked in which 3' hydroxyl group of the sugar of the one nucleotide unit is esterified with the OH group of the phosphate attached to the 5' atom of the sugar. So एक nucleotide का one nucleotide 3' hydroxyl group of the sugar one nucleotide unit is esterified with the OH group of the phosphate of the 5' phosphate. So it is a 3' 5' or we can say 5' 3' phosphodiester linkage. Here we can see this linkage that in first nucleotide is having its ribose sugar, and uska third hydroxyl group is esterified with the fifth phosphate group of the next incoming nucleotide. So phosphodiester bond is shown here between the two nucleotides, cytosine and guanine, and guanine and adenine. They are making the straight chains, and 3' end is a growing end. Nucleotide form phosphodiester linkages ताकि ये chain बना सके like a polypeptide unit. Polypeptide chain has a specific polarity and 3' 5' ends, and 5' has a phosphate group and 3' has a OH group at the ribose. The base sequence in the polynucleotide chain is written 5' to 3' direction. So 5' phosphate group होता है, 3' OH होता है, और हमेशा बेस न्यूक्लियोटाइड जो लिखे जाते हैं ओरिएंटेशन 5' to 3' डायरेक्शन बताते हैं. जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया. इट गिव द double helical three-dimensional model consisting the two polypeptide chain in which they are wrapped around in a right-handed double helix. The two strands are oriented anti-parallel to each other. Their 5' 3' bonds are running in the opposite direction, and the sugar phosphate backbones of the double helix are exposed to polar environment. The bases of both the strands are stacked inside of the core, and the double helix make it the hydrophobic. सो बेसिस अंदर की तरफ रहते हैं और शुगर की बैकबोन बाहर की तरफ रहती है, तो इस वजह से बेसिस एक्सपोज नहीं होते पोलर एनवायरनमेंट से. डबल हेलिक हाइड्रोफोबिक एक कोर इनसाइड कर लेता है. विद इन द हेलिक्स ईच न्यूक्लियोटाइड बेस वन स्ट्रैंड मेक हाइड्रोजन बॉन्ड in the same plane with the base of the other strand. A of one of the strand forms two hydrogen bond with the T of the other strand. Adenine form two hydrogen bonds with the thymine, vice versa. G and on one strand will form three hydrogen bonds on the cytosine, vice versa. Here is the structure of the double helix, which is shown how the two helix are making the helical chains at backbones, sugar phosphate backbone, and there are two helix which are coiled to each other, and in between the hydrophobic amino acids are coiled inside the both the chains, and all the hydrogen bonds are stacked one over the each other because they are making parallel bonding. The Watson and structure of the DNA is also known as bDNA. Watson का structure bDNA कहलाता है. bDNA most stable होता है form of DNA, and the other structural variants दो और होते हैं, ADNA और ZDNA. ADNA is right-handed double helix. It is wider than per base pair. वाइडर होता है bDNA से. इसे have 11 बेस पेयर्स होते हैं उसके अंदर, एंड ZDNA एज लेफ्ट हैंडेड. ZDNA लेफ्ट हैंडेड होता है और इसके अंदर 12 बेस पेयर पर हेलिक्स होते हैं, ये और वाइडर होता है. द बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ DNA डबल हेलिक्स
joined by hydrogen bond. Heating disrupt the hydrogen bond between these bases and thereby denaturation and melting. कुछ प्रोसीजर्स में हमें जैसे पीसीआर में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें मेल्ट करना पड़ेगा. हीट अगर हम थोड़ा देंगे 90 डिग्री पे देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं बेस पेयर्स के और सेपरेट हो जाते हैं दो डीएनए स्ट्रैंड्स. जब दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल से दे कैन ऑल्सो हेल्प in polymerizing, and the temperature at which they are melted, the DNA is melted, it's called melting temperature. And apart from heating, melting is also caused by acid or alkali. Chemical treatment से भी हम melting करा सकते हैं. The two strands of nucleic acid that are separated by melting spontaneously reassociate to form double helix. टेम्परेचर को अगर थोड़ा भी कम करेंगे तो वो वापस से अनील हो जाएंगे, वो वापस से कह सकते हैं बॉन्ड कर लेंगे अपने अंदर. डिक्रीज बिलो टीएम, अगर टीएम के नीचे अगर टेम्परेचर गया, दिस प्रोसेस कॉल्ड एनीलिंग. इसी प्रोसेस को एनीलिंग कहते हैं. Initiation codon, stop codon is shown here. UTR coding regions, schematic representative typical prokaryotic mRNA का ये इन्होंने डायग्राम दिया. Untranslated regions at the 3-5' position and untranslated regions UTRs. These are the 3' regions because they have regulatory sequences, and inside it they have a coding region where they have genes, few genes which are there with their promoters. One promoter at the because it is a prokaryotic mRNA, it will be having a operon, like if it lactose metabolizing genes, all the lactose metabolizing genes will be having common promoter and common operator region, and then they will be having all the three genes, Z gene, Y gene, and A gene, back to back, controlled by the same common promoter. So this is the way a typical prokaryotic RNA is shown. Types of mRNA, there are 3 types of mRNA. Messenger RNA, it is single-stranded linear polyribonucleotide chain that carries genetic information from DNA to ribosomes. और ये मैसेज लेके जाता है, इसलिए इसका नाम मैसेंजर हो गया. At 5' and UTR untranslated regions containing no genetic information, polypeptide synthesis के लिए information होती है. It's follows by initiation codon. एक इनिशिएशन कोडोन होता है और कोडिंग रीजन होता है, और फिर स्टॉप कोडोन होता है. द 3' एंड present another UTR and 5' end contain guanylate which methylated and 7. This process called capping. And 3' end of the mRNA also है polyadenylation. तो ये होते हैं हमारे यूकैरियोटिक आरएनए के फीचर्स के. उनमें 5' पोजीशन पे भी देयर इज 5' मिथाइल गुआनोलेट. तो और 3' पोजीशन पे भी दे हैव एडिशन ऑफ सेवरल एडेनाइलेट रेसिड्यूज, बहुत सारे ए रेसिड्यूज होते हैं. तो एमआरएनए यूकैरियोट्स में इस तरह का होता है. और tRNA इज द नेक्स्ट आरएनए व्हिच इज डायग्राम इज शोन हियर. इट इज हैविंग 3 लूप्स एंड arms. So acceptor arm is there which accept the amino acid attachment site at 3' position, and the 5' position is and other end point. With then it is started making a arm, straight arm with the hydrogen bonding of the opposite RNA part, and then it is forming a free loops and then a second loop which is called as anticodon loop. This is important because it is anticodon loop. It is having a sequence opposite to the mRNA sequence because it is going to read mRNA triplet genetic code, and the other loop is there, next loop. So 3 loops are there, and arms are there in the tRNA. tRNA is a transfer RNA. A ribosomal RNA, structural component of ribosomes. 70S prokaryotic ribosomes is 16S RNA in the smaller subunit. 70S के अंदर 16S RNA होता है smaller subunit में, 30S, 23S and 5S RNA in the larger subunit. इनमें larger subunit में होते हैं ये 30, 23 and 5S. The eukaryotic ribosomes 80S and the 18S rRNA smaller subunit. 40S, 28S, 5.8 and 5S rRNA. So they are present in the 60S. So these we have to remember कि कौन सी सब यूनिट्स में क्या क्या आरएनए थे. ट्रांसफर आरएनए, जैसे हमने आपको बताया कि ट्रांसफर आरएनए के ट्रांसलेशन में हेल्प करता है बिकॉज ट्रांसफर करता है ये आरएनए मॉलिक्यूल
small होता है, and it transfers the amino acids to the ribosome during photosynthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त ये राइबोसोम्स के पास अमीनो एसिड को लेके आता है, and it is a single ribo polynucleotide chain folded to form 4 arms. एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि 4 आर्म्स बनाती है. एक्सेप्टर आर्म है CCA सीक्वेंसेस है 3-OH एंड. तो सी एडेनिन रेसिड्यूज होते हैं 3-OH एंड पे, जहां पर अमीनो एसिड आके अटैच होगा, एंड अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट उसके पास होती है. द एंटीकोडोन आर्म हैज, एंटीकोडोन की आर्म के पास सेट ऑफ 3 बेसिस होते हैं विच रिकॉग्नाइजेज अ स्पेसिफिक कोडोन ऑफ mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. So they have a set of 3 bases which recognize a specific codon mRNA during translation. Summary is given. कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम से मिलते बने हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट और टिश्यूज में. कार्बोहाइड्रेट 4 मेजर कैटेगरीज के: मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, राइबोज, डाइसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, ओलिगोसैकेराइड्स, रेफिनोस, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन. मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया ट्राइओसिस, सेट्रोसिस, पेंटोसिस, एक्सोसिस में, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन. पेंटोसिस शुगर सच एज राइबोज इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोएंजाइम्स. The two monosaccharide linked by glycosidic bond make the disaccharide. Polysaccharide perform various roles on the storage form of energy and also structural component. Lipids are organic compounds found in the living organism. They are made up of hydrophobic fatty acid chains linked to glycerol via ester bond. And fatty acids are long chain hydrocarbon containing carboxylic group. Fatty acids may be saturated in double bond or no double bond. Nomenclature of fatty acid is based on the total number of carbon atoms and total number of double bonds and position of the double bonds. Lipids broadly classified into simple lipids and compound lipids, and esters of triglycerides are the esters of fatty acids, glycerol, and compound lipids include membrane lipids like glycerophospholipids. Single lipids, compound lipid are amphipathic because they are having polar head and non-polar tail. Glycerophosphor contain glycerol backbone. Sphingolipids contains sphingol backbone. Steroids is another class of compound lipid made up of 4 fused rings. And cholesterol is most common steroid found in animals. This is precursor of all steroid hormones. And vitamin D. The amino acids are organic compound containing amine group and carboxylic COOH functional group along with the side chain R group specific to each amino acid. There are 20 standard amino acid, non-standard amino acid, example 4-hydroxypyridine and 5-hydroxylysine. 4-hydroxyproline and 5-hydroxylysine are standard amino acid. And some non-protein amino acid, L-ornithine, L-citrulline. In a polypeptide chain, the amino acids are linked covalently by peptide bond linear fashion to make a protein. There are 4 levels of protein structure, namely primary, secondary, tertiary, quaternary. Primary structure of protein in the linear chain of the amino acid sequence linked to the peptide bond. Secondary structure of protein is 3-dimensional form of protein. And the 2 major type of secondary structure, alpha helix and beta sheet. Tertiary structure is 3-dimensional arrangement of the protein. Quaternary structure is the complex arrangement of folded protein subunits stabilized through the hydrogen bonding and electrostatic interactions. And nucleic acids are the polymers of nucleotide which contain nitrogen bases, adenine, guanine, cytosine, and thymine, and uracil, sugar, and phosphate. So with this, we have come to the end of the chapter, new biomolecules, and we have finished the discussion of the and revising it. And now I hope you have all have understood it, and all the concepts are clear to you. And if you have any doubts, you can also give me your doubts in the comment sections. And I was your teacher with you, Hemlata Yadav, and explaining you about today about the various structures of the protein, primary, secondary, and tertiary, and even the nucleotides and the DNA and RNA nucleic acids. So with this, I would like to end my lecture here. And if you like the video, then please hit the like button and share your love towards me and towards my video, because it acts as a motivation for me to work more next time more enthusiastically to prepare the video. So अगर आप like button दबाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगती है कि आपने मेरा video पसंद किया. So please hit the like button and share to as many students as you can. So with this, I would like to end my video. Thank you.